हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज हम लोग I7 में सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे। डायबिटीज जिसको हम लोग मधुमेह भी कहते हैं या शुगर की प्रॉब्लम कहते हैं, एक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज है और इस बीमारी का एक बहुत ही खतरनाक असर हमारे आंख के पर्दे पर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। और अगर इस प्रॉब्लम का टाइमली डायग्नोसिस और इलाज नहीं करा गया तो अक्सर ये प्रॉब्लम पेशेंट को अंधा कर देती है। हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। मोतियाबिंद के बाद जो सेकंड लीडिंग कॉज है अंधापन का, वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो आज हम इसके अराउंड I7 में एक अवेयरनेस वॉक कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों को इस बीमारी के बारे में और जागरूक करना चाहते हैं। और एक मैसेज हम आपको बहुत स्ट्रांगली देना चाहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज, मधुमेह या शुगर की बीमारी है तो साल में एक बार आपको अपनी आंखों का चेकअप, स्पेशली पर्दे का चेकअप कराना जरूरी है, जिससे कभी भी ये डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसका टाइमली इलाज हो सके और जो इसकी ब्लाइंडिंग सीक्वली है, जिससे पेशेंट अंधा हो सकता है, उस प्रॉब्लम को हम ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट या बचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, I am Dr. Pawan Gupta, Senior Retina Consultant at I7 Hospital, Lajpat Nagar. So today we have gathered here, we have organized a diabetic awareness walk. So diabetes is just not about controlling your blood sugar levels, it is about taking care about your whole body. Basically, diabetes can affect from head to toe, and mainly it affects your eyes, heart, kidney and nerves. So basically this awareness campaign that I7 Hospital has started is to make aware the people who are suffering from diabetes that they need to take care of their whole body. As far as eyes are concerned, diabetes is a silent killer of your vision. It can cause multiple problems in your eye. Cataract कर सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी कर सकता है, आपकी आंख में ब्लीडिंग हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके नियर वंस, डियर वंस को कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो रेगुलरली अपना आई चेकअप कराएं। देयर इज़ अ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, ताकि उनका एनुअल रेटिना चेकअप होना चाहिए। एंड अगर उनको कोई भी आँख के अंदर प्रॉब्लम है तो हम उनको टाइमली मैनेज कर सकें, ताकि उनकी जो विजन है उसको टाइमली बचाया जा सके। As we know that India, it's the capital of diabetes in the world. In our world, it's like 260 million people who are suffering from diabetes, who are not diagnosed and reach us in the last stage. So what I would suggest the people that timely investigation, timely prevention can help in preventing their lives getting better. So come to us, get yourself tested when you come to know that you're diabetic, or maybe a yearly checkup. Make it a part of your regular life. हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज़। डायबिटीज़ जैसे हमें पता है ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है। सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं, हमें ब्लड शुगर मेंटेन तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बीपी, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बैलेंस डाइट के थ्रू हमें प्रॉपर खाना खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने चाहिए, हमारी डाइट वेल मेंटेन्ड इंटरवल्स पर होनी चाहिए। साथ में हमें एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ एनी लाइट एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग। साथ में हमें अपना रेगुलर आई चेकअप और फुल बॉडी चेकअप भी रेगुलर इंटरवल्स पे कराना चाहिए। जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं उनको अपनी मेडिकेशंस प्रॉपर टाइम पे लेनी चाहिए, जो उनके डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस की गई है।
डायबिटीज़ एक लॉन्ग टर्म बीमारी है, सो इसका ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म नहीं होता, इसलिए आप टाइम टाइम पर अपना ब्लड शुगर, HbA1c लेवल्स चेक कराते रहिए ताकि आपके आगे की ट्रीटमेंट प्रॉपर प्लानिंग पे चलती रहे। साथ में आपको अपनी फैमिली को भी चेक करते रहना है, फैमिली स्क्रीनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। As you all know, diabetes is a global pandemic, and according to WHO, 1 in 3 patients with diabetes suffers from diabetic retinopathy. So there are certain tests that we do to evaluate diabetic retinopathy. So first of all, vision and intraocular pressure is done, and then we dilate the patient to check dilated fundus examination. Then OCT, which is known as optical coherence tomography, is done to evaluate diabetic macular edema, which is the swelling in the retina. Then there is a test known as fundus fluorescein angiography, in which the dye is put in the vein to check the blood supply of the retina and abnormal new blood vessel formation. Diabetes is a global pandemic. Not only does it affect the retina, it also affects the cornea. The cornea is a thin transparent layer in front of the eye which gets affected by diabetes also. It leads to corneal infection and also the loss of the transparent layer of the cornea. So not only don't you have to be affected about your retina, you also have to take care of your cornea as well in diabetes. Good glycemic control is the main factor which helps and early detection. As soon as you get tested with type 2 diabetes, it is better that you get yourself tested both for your retina and also your cornea. Control your sugar, save your eye. Control your sugar, save your eye. Control करो, शुगर को कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, शुगर को कंट्रोल करो। And diabetes is not only a retina problem, it is also a glaucoma problem. So uncontrolled diabetes leads to neovascular glaucoma, which is one of the most difficult glaucoma to treat. So it's better to prevent by keeping your sugar levels at check. Today on World Diabetes Day, we urge every diabetic patient to get your eyes tested.